Welcome dear learners, this is exercise 2.4 and in this exercise you have to deal with the vector triple product which is a cross b cross c equals a dot c times b vector minus a dot b times c vector। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि आपने पहले ए को सी से डॉट लेना है देन बी वेक्टर और फिर ए को बी से लेना है। अगर आप पहले ए को बी से लेंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए पहले बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। तो बी क्रॉस सी का आंसर आ गया -2i + j - k। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ आंसर आ गया है -i - j + 3 के। नाउ वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड इन विच वी हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ दीज टू एंड टेकिंग द डिफरेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया है जी कि पहले डॉट प्रोडक्ट लिख लिया, दिस इज ए डॉट सी एंड दिस इज बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी एंड दिस इज सी वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर के साथ और इसका डॉट प्रोडक्ट -1 आया उसको सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा -i + 2k + j और ये आ जाएगा -i + j + 3k which is the same as left hand side. So left hand side equal to right hand side, hence proved. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 3 वेक्टर्स गिवन है और आपने सिंपली ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको क्रॉस ले लेंगे ए के साथ। सो हेयर बी क्रॉस सी इज 4i + 10j - 6k। नाउ टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट विद ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो आपको इसको सेकंड पे ही रखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। तो आई जे के में टॉप पे हम बी क्रॉस सी रखेंगे जो आंसर आया और ए का नीचे लिखेंगे। तो सिंपली आफ्टर एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट यू विल गेट द फाइनल आंसर एज -32i + 8j - 8k। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। डिफरेंस ये है कि वहाँ बी क्रॉस सी को हमने ए के साथ क्रॉस लिया था, यहाँ भी हमने ए के साथ ही क्रॉस लेना, लेकिन यहाँ पे ए लेफ्ट साइड पे है वहाँ पे राइट साइड पे है था। सो पहले यहाँ बी क्रॉस सी कैलकुलेट किया और जो आंसर आया उसको ए के साथ क्रॉस ले लिया। तो फाइनल आंसर बना -9i - 6j - 3k। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये 3 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स इवेल्युएट करने हैं और इनके लिए हम साइक्लिक परम्यूटेशन यूज़ करेंगे जिसमें हम आई जे के जिसमें हम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सच दैट आई जो क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, इसी तरह बाकी भी। तो पहला है आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के का आंसर क्या है? आई। दिस इज आई एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद जे क्रॉस के इज आई क्रॉस आई इज 0। और सेकंड इसका है जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो जे क्रॉस के क्रॉस आई इज जे एंड जे क्रॉस जे इज 0। Now bracket is I cross k. I cross k will be -j because in clockwise direction, opposite direction, I cross k will give -j and we take the cross product with this I and j cross I. This is also in opposite direction. J cross I is -k, so minus times -k. Final answer will be k unit vector. क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्रॉस प्रोडक्ट है 4 वेक्टर्स का, तो इसमें आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सिंपली आप क्या करेंगे, इसको एक न्यू वेक्टर पुट कर लें। लेट कर लेते हैं कि जो एम वेक्टर है न्यू वेक्टर वो बी क्रॉस ए के इक्वल है और इसको फिर ये एम क्रॉस ए क्रॉस सी बन जाएगा और इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का विच इज़ एम डॉट सी ए माइनस एम डॉट ए सी। अब यहाँ पे m की वैल्यू डाल देते हैं दोबारा। m इज b क्रॉस a डॉट सी ए वेक्टर माइनस b क्रॉस a डॉट a सी वेक्टर। अब ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुकी हैं कि ये इसका आंसर ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा b क्रॉस a डॉट सी विद a वेक्टर। इसको लिखा जा सकता है c डॉट b क्रॉस a। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a वेक्टर और इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो यह आ जाएगा c b a विद a वेक्टर, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 6 में आप ये नई क्वेश्चन सॉल्व करनी है और ये आपने शो करना है कि जो इनका सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स है वो इक्वल आता है 0 के। तो सब में आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और अब आपने ये देखना है कि ये दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन, दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन। Now as you know that the dot product is commutative, so a dot c is equal to c dot a। तो ये वेक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये वेक्टर c डॉट b डॉट c के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0 विच इज़ द राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने इन 3 वेक्टर्स के ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये बन जाएगा a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c क्रॉस c क्रॉस a। अब पहले जो इसकी ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था कि अगर हमने 4 वेक्टर्स का लेना है तो उसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर को आपने नाम दे देना है m का, ये कोई भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर वही जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, m डॉट a c माइनस m डॉट c a, और उसके बाद इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे b क्रॉस c डॉट a, दिस इज c वेक्टर, माइनस b क्रॉस c डॉट c। तो ये जो है ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा b क्रॉस c डॉट a विथ c वेक्टर। और अब इस आंसर का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है a क्रॉस b के साथ। सो a क्रॉस b डॉट दिस b क्रॉस c डॉट a विथ c वेक्टर। तो ये लिखा जा सकता है a क्रॉस b डॉट c, ये इसके साथ डॉट हो जाएगा और ये बाकी बचेगा डॉट प्रोडक्ट विथ b क्रॉस c दिस इज डॉट a। इसको लिखा जा सकता है a डॉट b क्रॉस c क्योंकि ये इक्वल होते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c। तो ये बन जाएगा a डॉट b क्रॉस c का स्क्वायर, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा a b c होल स्क्वायर। दिस इज द राइट हैंड साइड, that's proved. Here again you have to prove the equality of left hand side and right hand side. So we take the left hand side here. Left hand side is like the last questions of vector triple product. We will let this as m vector and taking the cross product with c and dot d and using the formula of vector triple product. So here what is m? M is a cross b dot c with a vector minus a cross b dot a with c vector and the dot product with d vector. This will go to 0 and you will left with a cross b dot c और a vector dot d। तो इसको लिखा जा सकता है a dot d vector with, और इसको लिख सकते हैं a dot b cross c। So a dot d and this is the scalar triple product a b c, right hand side. In question number 9 you have to determine the components of this a cross b cross c along the direction of I j k, means आपने a cross b cross c के जो I j और k components हैं वो बताने हैं। तो a वेक्टर के 3 components होते हैं generally। So here this is now a cross b cross c equals a dot c b vector minus a dot b c vector. Now expanding b vector in its components, which is b1i plus b2j plus b3k, and similarly the c components are here. Now अब आपने इसको expand करना है a dot c b1 i component plus a dot c b2j component and likewise others. Now combining the ith components, jth components and kth components. This is a dot c b1 I and this is also minus a dot b c1 I component and similarly the combining of j and k component. Now separating I from this and j from this and k from this. So here these are the, this is I component,
This is J component and this is K component of vector triple product of A cross B cross C. Question number 10, 11 and 12 are same questions and will be done on the same lines, and these are important questions. And it is given that if A, B, C are three unit vectors such that this condition holds, find the angles which A makes with B and C, where B and C are non-parallel. If they are non-parallel, then they are not the scalar multiples of each other. So using the given relation A cross B cross C equals half B, these are the unit vectors. Because these are unit vector, then their magnitude will be 1. Now taking its formula, A dot C B vector minus A dot B C vector equal to half times B. Now comparing the coefficients of both sides of B and C, you will see that A dot C equals half times B vector and A dot B equals 0, because the coefficient of C is 0 here on the right hand side. Now using the dot product formula, A magnitude C magnitude cos of theta equals half. Let's put this theta as alpha and this as theta as beta, because two angles cannot be same between A dot C and it generally not same. Now A magnitude and C magnitude are 1 because these are the unit vectors it is given. So you will get cos alpha equal 1 by 2 and cos beta equals 0. And to find alpha, you will take inverse cos inverse 0 is beta. Alpha is equal to 60 degrees and beta equal to 90 degrees. So A makes an angle of 60 degree with C and an angle of 90 degree with B. क्वेश्चन नंबर 11 में बाकी क्वेश्चन वही है, सिर्फ रिलेशन में डिफरेंट B के साथ जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है. तो A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स स्क्वायर रूट 3 B यूनिट वेक्टर, और इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C vector equals square root 3 by 2 B vector. Now comparing the coefficients of B and C, you will get A dot C equal square root 3 by 2, the coefficients of B on both sides, and minus A dot B equal to 0, the coefficient of C on both sides. So similarly, A magnitude and C magnitude are 1. So cos alpha is equal to square root 3 by 2 and cos beta equal to 0. Alpha equal cos inverse square root 3 by 2 and b squared beta equal cos inverse 0. Alpha equals 30 degrees and beta equals 90 degrees. These are the angles which A make with C and B respectively. Question number 12 is a little bit different from question number 10 and 11 because here the two components on the right hand side are given. So comparing the coefficients of B and C, so A dot C will be 1 by 2 and minus times A dot B equals minus times square root 3 by 2. The dot product formula, A magnitude C magnitude cos alpha equals 1 by 2 and minus minus will be cancelled, and A magnitude B magnitude cos beta equals square root 3 by 2. A magnitude C magnitude and B magnitude are 1, cos alpha equal 1 by 2, cos beta equals square root 3 by 2, and alpha equal cos inverse of 1 by 2 and beta equal cos inverse of square root 3 by 2. Alpha equals 60 degrees and beta equals 30 degrees. Question number 13 is a two-side proof that you have to show that this condition will hold if and only if the vectors A and C are collinear. So firstly you will prove that this condition hold if the vectors A and C are collinear, and secondly on the opposite side you will prove that if A and C are collinear then this condition hold. On the first side, let this condition hold and you have to prove that A and C are collinear. Now putting the formula of vector triple product on both sides, this will be cancelled out and you are only left with A dot B C vector equal minus times C dot B A vector. This will be A dot B C vector equals C dot B
a vector, and you can also divide it on the right hand side, a dot b a vector. What is this? This is a scalar. The answer of this will be scalar, this will be scalar. So you can write it c equal to lambda times a, where lambda is any scalar. So what is this? This is the condition or definition of collinear vectors. So c and a are scalar multiples of each other, hence c and a are collinear. Now on the opposite side, you will take c and a collinear as are given, and you have to prove this property. Conversely, suppose that c and a are collinear is given. Now you have to prove the property. If they are collinear, they can be written as a scalar multiples of each other. C equal t times a, where t is any scalar, or u over for example mu over nu are other scalars. You can write it c equals mu over nu are scalars. You can also write it the scalar multiples. Let mu be c dot b and nu is a dot b, a vector. This will be after taking the cross multiplication, a dot b c vector minus c dot b a vector. This is also equal to, you can write b dot a c vector minus b dot c a vector. So this is equal to this. These two are same. A cross b cross c equal a cross b cross c. Hence proved that if c and a are collinear, then this property hold only. If this condition not hold, then this property will also not hold. क्वेश्चन नंबर 14 में आपने ये प्रूफ करना है कि इसका आंसर आफ्टर सिंप्लीफाइंग ए वेक्टर के इक्वल आता है. तो यहाँ से हम इस पूरी चीज़ को ले लेते हैं. नाउ सिंपली इसका हम जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, विच इज़ आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई वेक्टर. Now you see that I dot I is 1, so here only left with a vector, j dot j is 1 and k dot k is 1. This now combining a, this a and this a. This is 3a vector, and separating minus times this and taking common the minus here. Now you see that a dot I will be the I component of a. This is a scalar, so you can write it as this is ai plus aj something a new scalar plus k. You can write it lambda I plus nu j plus mu k. This is a vector 1 by 2 3a minus a vector, because you are taking the dot product with the components of a. 3a minus a is 2a over 2 equal to a vector, which is the left hand side. Question number 15 is very simple, that a cross b dot c cross d will be 0 when c and d lie in a plane normal to the plane containing a and b. Now a cross b is a plane formed by two vectors. For example, this is a plane a vector formed by two vectors, and c and d, c cross d is also a plane formed by two vectors c and d. Now it is given that the dot product between these two planes equal to 0. A cross b dot c cross d equals 0. This is given. As you see, a cross b is another vector. Let another vector will be u dot. This c cross d will also form another vector. Let this vector will be v equal to 0. U dot v equal to 0. This is the condition of the vectors to be perpendicular. Hence, u is perpendicular to v, implies that a cross b is perpendicular to c cross d. Hence, prove that the plane which contains c and d lie in a plane normal to the plane containing a and b. Normal means perpendicular. We use perpendicular in terms of vectors. In terms of planes, we use the word normal. These two are the same words, normal and perpendicular, but in vectors we use it as perpendicular, and for planes we use it as normal.
In question number 16, you are given that A cross B cross C cross D equal to 0, and you have to show that if this property holds, then A, B, C, D are coplanar. Now A cross B is, because it's the cross product, it will form a vector, for example U, and cross B equal to 0. This property holds when U and V are parallel. So U, it implies that U is parallel to V vector. Now in terms of planes, this form a plane, we use coplanar term. In terms of vectors, we use the term parallel. It implies that A cross B is coplanar to C cross D. Coplanar means they are lying in the same plane. If A cross B is coplanar to C cross D, it implies that A, B, C and D are all coplanar. Hence proved. This was the solution of exercise 2.4. अगर आपको ये समझ आ गई है और आपको समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और थैंक यू सो मच.